So the chapter which we are starting today is circular motion. Now remember, this chapter is a precursor to rotational mechanics, right? Which is supposed to be or assumed to be one of the most difficult chapters in physics. रोटेशनल मैकेनिक्स को काफी कठिन चैप्टर माना जाता है, ठीक है, माना जाता है नहीं। आप चीजों से तभी प्रभावित होने लगते हो जब आप मान लेते हो, राइट, कि ये ऐसा है। मेरे को एक गिलास पानी देना। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, once you start fixing the boundaries or once you start assuming कि ये ऐसा है, you start operating from that point. जैसे for example, I'll tell you this thing. How many of you are aware about difficulty, or this chapter is difficult, this topic is difficult? You have already used this word, yes or no? All of you use this word. This chapter is difficult. Sir, ये समझ नहीं आया. It was difficult for me. Yes or no? Tell me. Yes, sir. All of you say this. Yes or no? Yes, sir. Yes. Sometimes. Why are you? Sometimes, obviously, yes. Why do you say it is difficult? Because you are Sir, we facing said an when exact we don't situation. understand. No, you are facing an exact situation which you have faced earlier also while dealing with certain kind of things. Yes or no? तो दिमाग जो है ना, दिमाग, ये Yes, इसने उस शब्द को प्रिंट करके रखा हुआ है, कठिन, डिफिकल्ट। sir. तो वो हमेशा जैसे ही तुम डिफिकल्ट बोलते हो, वो पुरानी सारी डिफिकल्टी के सारे इमोशंस लेके आ जाते, और उस जगह से तुम डील करने लगते हो इस डिफिकल्टी। तो ऑलरेडी जो पुराना है वो भी डिफिकल्ट था, उसका उसका जो ट्रॉमा था वो है ही तुम्हारे पास। अब तुमने बना लिया है कि ये चीज डिफिकल्ट है, अब तुम वहां से उसके साथ डील करने जा रहे हो। तो अब तुम मुझे बताओ, सिंपल सा है, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, यू डोंट नो अबाउट दैट क्वेश्चन, पहली बार, फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग इट, व्हाट विल हैपन टू यू इन योर माइंड इफ यू से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? All those baggages of difficulty will come forward, and then you will start solving that question. What if you say this is a simple question, I can solve it? You haven't solved it yet in either of the cases, but you have to solve it. एक, तुम सोचते हुए आ रहे हो कि ये डिफिकल्ट है, और वहां से तुमने उसको ऑपरेट करना शुरू किया, और दूसरा ऑपरेशन क्या कर रहे हो तुम, ये सिंपल है, मुझसे हो सकता है, इस फ्रेम से सॉल्व करना शुरू किया, और तब तुमने उसको अटेम्प्ट किया। विच वन विल बी एन इजियर मेथड फॉर यू टू डू, इजियर प्रोसेस फॉर यू टू टेक, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? Second one. Obviously second one, right? So that is what I said. This chapter is a precursor to one of the presumed difficult chapter in physics, that is rotational mechanics. So please, when you are reading this chapter, read it. It's a very simple chapter, very simple. इसमें जो तुमने पढ़ लिया है वो बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो इसलिए इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ पढ़ने में, ठीक है? तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। आ जाओ। तो टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन, first of all we should know what is circular motion. What is circular motion? बोलिए। Sir, when an object or an entity moves in a circular path. So circle is the locus of points which are always at equidistant
which are always equidistant from a given point. Circle is the locus of points which are always equidistant from a given point. ठीक है? Locus का मतलब you can assume it to be a path. You can say that it's a path. So suppose I take this point, ठीक है? And I take two sticks, ठीक है? एक स्टिक को यहां फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है? यहां पे फिक्स कर दिया और एक स्ट्रिंग लिया, दूसरी स्टिक से उसको टाई किया. आई टाई दैट स्ट्रिंग टू अ डिफरेंट, द सेकेंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ पेन, मान लो इसको. वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू दिस स्टिक, द अदर एंड इज टाइड टू दिस पेन, ठीक है, एट दिस पॉइंट. और तो पेन हो गया ये. एंड नाउ आई कीपिंग दिस स्ट्रिंग टॉट, आई start rotating this pen. It will eventually make a circle like this. Yes or no? यहाँ पे जो था ये, अगर इसको रोटेट करते जाएंगे यहाँ पर, we will get a circle. Yes or no? Yes. So this is the locus of all the points which are equidistant from point C. Every point on the periphery of the circle is equidistant from the center of it, right? So what is circular motion now? Circular motion is when an object goes in this circular path, it is undergoing circular motion. Simple है ये. Say yes or no. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये आप सबको पता है ना. तो अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है एंगुलर वेरिएबल्स. टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन देयर आर सम एंगुलर वेरिएबल्स विद अस. कौन कौन से वेरिएबल्स हैं देखते हैं. फर्स्ट वन इज Theta. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वी डिनोटेड बाय थीटा. And what is angular displacement? It is angle traveled by the particle in time t. ठीक है. Its SI unit is radians. In short, it is written as rad. और डिनोट कैसे करते हैं इसको? इस तरीके से डिनोट करते हैं. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बोलो बे बच्चों, समझ आया नहीं आया तुमको? हेलो. Absolutely, sir. Yes, sir. हाँ. ये है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, वो समझते हैं. तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है. मान लेते हैं पार्टिकल P है. at time t is equal to 0, it is at this location. Now this particle P started rotating in anti-clockwise sense and it reaches this point. ठीक है. This is point Q. नहीं, point Q क्यों है? Point
पार्टिकल पी ही है वो, तो यहां से चला t0 पे और यहां पहुंचता है ये पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू t. So in this time, it covered this angle theta. The circle is in xy plane. The circle is in xy plane. ठीक है? हेलो. Yes, Yes, sir. sir. यस सर. तो आप लोगों को बताना है कि थीटा का डायरेक्शन क्या हो. कौन बता रहा है? जल्दी बताओ फटाफट. थीटा का डायरेक्शन बताओ भाई जल्दी से. तो कोई नहीं बताएगा. तो देखो Sir, ऑल it ऑफ is यू. moving and anti-clockwise from the positive x-axis. Okay. Now there are two different things. One is direction, the other one is sense of rotation. One is direction, the other one is sense of rotation. Sense of rotation is clockwise and anti-clockwise. Sense. They are never directions, okay? हम लोग जो बोलते हैं कि ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट. You are deriving the sense of rotation from the rotation of the hand of clock. So always remember that it's not direction, it's a sense of rotation. In this case, how to find the direction? You curl your right hand palm fingers. All of you do this. You curl your right hand palm fingers in the sense of rotation of this object and keeping your thumb stretched. तो क्या मिल रहा है? The thumb is coming out of the plane. Yes or no? Yes, sir. All of you say yes or no. The thumb is Yes, coming out sir. of the plane. Yes, sir. Yes, sir. So what is the vector which is coming out of the plane? If the plane of your screen is xy plane, then what is that vector which is coming out of the plane? Z. Z. Name. Z axis. Very good. So it's plus k cap. So in this case, our theta vector is along k cap, On z-axis. right? Yes. So in case of anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense, what is the direction of theta? Curl your right hand palm fingers in the sense of rotation clockwise, keeping the thumb stretched. It is going into the plane, right? So it is Yes. negative z axis. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes. Any doubts? No, sir. Perfect. बाकी कोई जनता? No, अरे sir. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ. तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हमारा नहीं मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सर कैन यू एक्सप्लेन वो के कैप कैसा है अगेन? तुमको मैंने कुछ काम करने को बोला, तुमने किया या नहीं किया ये बताओ पहले. क्या सर बोला था थोड़ा मैंने? सीधे वो हाथ की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो. करो अंगूठे को स्ट्रेच करके. हम्म तो थंब कहाँ जा रहा है तुम्हारा? बाहर. तो प्लस के कैप है वो डायरेक्शन. पढ़ा है ना अच्छा. तुमने? अगर हाँ. एक्स वाई प्लेन तुम्हारा स्क्रीन है तो प्लस के कैप कहाँ आएगा? लॉन्ग जेड एक्सिस. हम्म तो आया. हाँ. अब ऐसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करके देखो थंब कहाँ जा रहा है? अंदर. हाँ. तो दैट इज माइनस के कैप. ओके. ऑलवेज रिमेंबर a plus k cap or a positive z vector is given by a dot. A positive z axis or a vector which is coming out of the plane is given by a dot. A vector which is going into the plane is given by a cross. पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. So this is it. Then comes the second part of it, the second definition of angular
velocity. It is the rate of change of the it is the rate of change of angular displacement. ठीक है. Its SI unit is radians per second. So it is given as omega vector, which is rate of change of theta, like this. And its unit is radians per second. ठीक है. समझ आया नहीं आया यहाँ तक सब? Yes, sir. समझ में आया सर. फिर आता है थर्ड वाला. Angular momentum. नहीं. Oh. Angular acceleration. It is the rate of change of angular velocity. ठीक है. Its SI unit is radians per second square. This is similar to kinematics, what you have done in kinematics. Always remember this, right? So radians per second square. ठीक है. It is given as alpha, and this is rate of change of angular velocity, or it is also given as d2 theta vector upon dt2, and this is radians per second square. ठीक है. यहां तक कोई डाउट है तो भाई पूछ लो सब. कोई डाउट है किसी को? नहीं सर. Okay. There are two more units. One is RPM. नहीं, यही यूनिट है बस, टू नहीं है. This is called as one rotation per minute. ठीक है. तो कितना? This is equivalent to 2 pi radians. In one rotation there is 2 pi radian, and if I want to convert it into seconds, it is, so this is pi by 30 radians per second. 1 RPM is equivalent to pi by 30 radians per second. कॉपी करो इसको.
Sir, All of that you noted it? sir, Done? हाँ बोलो ईशा. sir, that X mark is for a vector going out of the plane, right? Sorry, into the plane. Which one? That X mark. X not? The round with the cross, like in the diagram. That dot. The dot, no, the other one. Yeah, those It's a two. cross. It's a cross. It's different from O Jesus cross, but it's a cross sign, na? Cut sign. Arey, you put this sign when you want to cancel something, yes or no? So that's why we call it as cross. Okay, sir. ठीक है? So it's a vector going into the plane, right? Yes, it's a vector going into the plane. Why? Because an arrow looks like this. See? This is how an arrow looks like. Yes or no? Yeah, yeah. So when you see this arrow, you flip this arrow and you just see the back portion of this arrow, this portion. So this is the portion of it. So that's why it looks like a cross going away from us. So in this case, the arrow's head is, and why tip? When the arrow comes towards you, you see only the tip of it, right? The first thing which you see is tip of the arrow. Yes or no? Yeah, yeah. That's why the dot. Okay, okay. ठीक है? All of you noted? Just type done in the Yeah, comment window if you have noted it. अरे डन लिखो ना अगर कर लिया तुमने तो नोट कर लिया है तो और आंसर द पोल एक सेकंड आई गिव यू द पोल टू क्लाइंब अपॉन चलो आंसर द पोल ये नो वाले जल्दी लिखेंगे भाई चले आगे सर नहीं सर लास्ट लिखो लिखो
चलो, हो गया तुम लोग का टाइम खत्म। अब देखो, now if you guys remember the equations of kinematics, remember equations of motion in kinematics? Hello, you guys remember the equations of motion in kinematics or Yes, not? sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. What was the conditions to use equations of motion of kinematics? We Isha? must be in one dimension. Acceleration is constant. Ah, acceleration is constant. So if you remember the equations of motion, it was equations of motion in kinematics. अच्छी। तो क्या था? Acceleration is constant. ठीक है, to apply the equations of motion, acceleration should always be constant. What was the first one? It was v is equal to u plus at, if you guys remember it. I'm just trying to help you recall what we have already learned. So this is, then the second one was displacement of the particle. It is ut plus half at square, right? Then the third one is v dot v is equal to u dot u plus 2a dot s. I hope all of you remember these equations. Yes or no? And then there was this displacement in nth second. I don't call it as fourth equation, but let's discuss that also. This is displacement in nth second. It was u into 1 seconds plus, क्या था ये? a by 2 into 1 into 2n minus 1. याद है कि नहीं है? हेलो, अरे हाँ ना बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? सर ये याद क्या? है। Isha, don't Yes, write sir. while I'm teaching you. I'm helping you recall it. You're not recalling, you're simply writing it. Why? Okay, sir. Sorry. हाँ, पहले सोचो ना बेटा, सुनो ध्यान से। Focus on what I'm trying to help you with, है ना? इसको सोचो, दिमाग लगाओ। So then, similarly, in circular motion, there are equations of motion of an object in circular motion. ठीक है? यहाँ पे angular acceleration is constant. So try to draw the analogy, right? Angular acceleration is constant. ठीक है? So first is omega final is equal to omega initial plus alpha t. Try to draw the analogy. U is initial velocity. So omega initial is initial angular velocity, right? Alpha is angular acceleration. याद है कि नहीं है? Yes, sir. Alpha is angular acceleration. T is time. And omega f is final angular velocity. Second, theta vector is omega initial into t plus half alpha t square, where the symbols have their usual meanings, right? Third is omega f dot omega f
is equal to omega I dot omega I. It's similar to what we have learned in this kinematics, right? ये डॉट है भाई, प्लस प्लस 2 अल्फा डॉट थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. लिखो इसको जल्दी से, फिर लिखो, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। I hope all of you are noted it. No, Done? sir. I have relaunched the poll. Answer it once you're done.
Noted. Noted, all of you? Hello. Yes, sir. Chalo. So let's move ahead. Now, how to use these equations? Okay. So let's see some problems based on this. वो रोटेशंस की जगह रेवोल्यूशन भी हो सकता है ना? रेवोल्यूशन में क्या होता है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है. तो कैन यू गाइस सी दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू? हेलो. Yes, sir. क्या लिखा है देखो. इट सेज आई विल डू द क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल टेक द इनपुट फ्रॉम यू. ठीक है, डोंट वरी. तो क्या बोलता है, द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 revolutions per minute. So revolution, one revolution is also equivalent to 2 pi radians, right? तो what is omega initial? It is initially rotating with this much value. So it's 100 into 2 pi upon 60 radians per second. ये cancel, ये cancel. So it is 10 pi by 3 radians, 10 pi by 3 radians per second. This is omega initial, right? It comes to rest in 15 seconds. So the time involved here is 15 seconds. Final angular velocity is 0 because it comes to rest. Assuming constant angular deceleration. So deceleration का मतलब क्या होता है? It's Alpha 2 pi. vector Alpha. is opposite to omega vector, right? Yes. This is angular deceleration. This we have learned, right? तो यहाँ पर we have to find alpha. First we have to find alpha and also we have to find theta. ये निकालना है. तो take any direction for this vector. So let's say omega I is, this is plus k cap. So since alpha is constant, assume constant angular deceleration, right? So since alpha is constant, we can use equations of circular motion. So omega final is equal to omega initial plus alpha vector t. This is 0. What is omega initial? It's 10 pi by 3 k cap plus alpha vector into 15. So alpha is 10 pi by 3 into 15 minus k cap. So 5 threes are 5 twos are. So this is 2 pi by 9 minus k cap. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. What about theta now? So can you guys try for theta? All of you do this. Write it first and then try finding theta. What is theta here? Do it.
हाँ भाई, लिखा Sir, आप लोगों ने? सॉल्व किया कि नहीं आप लोगों ने? yes, sir. I am launching the poll again. Once you are done, share the results, share the values. Chalo, I'll do this for you. For finding the value of theta, what you need to do is either you can use omega f dot omega f, the third equation of circular motion, or you can use simple this one, omega I t plus half alpha t square. What is omega I? 10 pi by 3 into t is 15 plus 1 by 2 into alpha. Alpha क्या है? 2 pi by 9 into t square is 225, 15 का square. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All these have same direction. So alpha is what? This is in minus नेगेटिव डायरेक्शन में है ना ओमेगा के, तो ये माइनस लिखना है यहाँ पर. तो क्या क्या आएगा देखो, तो ये कैंसिल कर दो इसको, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 थ्री जार, 3 सेवन जार, और अरे क्या मस्त काम हो गया ये तो. Senior 25. हाँ,
25 से काटो ना इसको, बढ़िया काम हो गया तो। एंड दिस इज 5, राइट? So this is 50 pi minus 25 pi. So this is 25 pi radians. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. If Yes, sir. according to the direction, it is plus k cap, right? So in terms of number of revolutions, क्या आएगा ये? बोलो भी बच्चों, क्या आएगा? Number of revolutions. How to find number of revolutions? N. Sir, 12.5. हाँ, this is 25 pi divided by 2 pi. तो कितना हो गया ये? 12.5 रेडियंस, नहीं सॉरी, रेवोल्यूशंस। ठीक है, हेलो, Yes, sir. लिख लिया इसको आप लोगों ने? Yes, sir. तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। लेट्स मूव अहेड विद दिस। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड। चले आगे। आप लोग कुछ सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? हेलो, आइए, Yes, Solve sir. करेंगे. करेंगे Yes, ना? वेरी गुड, शाबाश। कितना भला मानुस बच्चा है ये लोग सब, बहुत अच्छा बच्चा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल करके दिखाएंगे आप लोग मुझे, ठीक है? पंखा देखो, पंखा घुमाना है आज तुमको। करो। अरे विहान वर्मा, कैसे आया था तुम्हारा 145 पाई बाई 3? अरे वो टी स्क्वायर नहीं किया था, वो टी कर दिया था एंड में। अब बताओ तुम, ये सब छोटा छोटा सवाल में बेटा आराम से जहाँ करना है वहां पे भी ऐसा गलती होता है? सर मेरे एग्जाम में मोस्टली सिली मिस्टेक्स ही होते हैं। अबे तो ये नियम थोड़ी है बे। तुमको क्या सर्टिफिकेट मिल गया सिली मिस्टेक करने का है बेटा? नहीं सर। फिर क्या अवार्ड मिला है कि अब हम आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द अवार्ड आई हैव रिसीव्ड? नहीं सर। हाँ, तो ये सब मत बोला करो भाई, हो गया खत्म। उसको पता है सिली मिस्टेक है, सिली का मतलब हिंदी में क्या होता है? मूर्खता। इंग्लिश में सिली बोलने में कितना बढ़िया लगता है, हाँ है। सिली लगता है छोटा सा ही तो है, ये मूर्खता है, बेवकूफी भरी बात वो है ये, गलतियां। तो उसको ऐसे ही उसी उस इंटेंसिटी से लो। चलो करो करो इसको, आगे बढ़ो इस पर फटाक से।
हाँ भाई, क्या सीन है इसका? जगन्नाथ सेज 2.5 सेकेंड आंसर्स। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ काम क्यों नहीं करते हो? विहान तोले, अभिख्या, आन्या शर्मा, मिशिका, सर धीरेन रेड्डी। क्या बेटा? सर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और कब तक करोगे? कितने टाइम और लगेगा? चलो इधर आओ। क्या क्या बोलता है देखो इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो ओमेगा इनिशियल इज 0 at t0. A fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of, so omega final is how much? 400 rpm. Or you can also write it as 400 into pi by 30 radians per second. Right? Hello, hello, hello. यस सर। फिर alpha is constant. तो t0 पे ये था, but how much time did it take? 5 seconds. So find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. So from this data, you will find this value. And then you have to solve it for new omega f dash, which is omega f by 2. So that was 200 rpm, right? For this, you have to find the time taken. I hope all of you understood what to do. Yes or no? यस सर। तो ऐसे ही करना है बेटा इसको, और मतलब डेटा अगर ठीक से लिखोगे तो तुमको समझ में आने लगेगा। दिस इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा वेक्टर टी। दिस इज 0 प्लस, ये कैंसिल कर दो, 40 पाई बाई 3 into 5, तो 200 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। दिस इज अल्फा वेक्टर। ठीक है, अगर इसको के कैप में लिखना है तो के कैप लिख लो सब जगह। ठीक। ना व्हाट अबाउट दिस? तो ओमेगा डैश एफ इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इज 0 प्लस अल्फा विच इज 200 by 3 pi into t. This is equivalent to how much? 200 into pi by 30. So 20 pi by 3 radians per second. This is per second square. So substitute the value here. So it's 20 pi by 3 is equal to, always remember to have the same units on either of the sides, right? तो कितना टाइम लगा भाई इसको? हेलो, 1/10 seconds. Yes or no? सर अब अल्फा यस पे जगह 40 पाई बाई 3 लिखे। ओ, हाँ वही मैं सोचूं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, ज्यादा ही हो रहा था ये। दिस इज 40 पाई बाई 3 ना? थैंक यू धीरेन। तो अभी ठीक है? अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे।
Sir, in omega final, ओमेगा फाइनल क्या है? ओमेगा फाइनल इज the 20 sixth पाई line, बाई 3। ठीक तो है? the sixth line from the first. क्या सिक्स लाइन? ये While finding alpha. Yes, sir. That व्हाट Sir, इज you दिस? have taken 40 omega pi by final as alpha. Oh, this is omega final, no? 40 pi by 3. Yes, sir. हाँ, ओमेगा फाइनल क्या है? 40 पाई बाई 3। देख रहे हो तुम क्या क्या गलती होती है, बताओ। पूरा सवाल का कचरा हो गया। तो अल्फा इज 8 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर नाउ। 8 पाई बाई 3, omega dash f is 20 pi by 3 is equal to 8 pi by 3 into t. So t is 2.5 seconds. चलो ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको, आइए। लिखो भाई। एच सी वर्मा में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा में पेज नंबर 183, राइट इट। These are worked out examples of rotational mechanics chapter, huh? These are worked out examples of rotational mechanics chapters. ठीक है, दिख रहा है ये? हेलो, Yes, sir. ठीक। इसमें आपको करना है वर्कड आउट एग्जांपल्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, नॉट 3, 1 एंड 2 ओनली। वर्कड आउट एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। This is from chapter rotational mechanics. Okay. Solved example 1 and 2 and exercises 1 से लेके 5 तक। ठीक। Very simple questions. You have seen the questions today. So these are very simple questions. So please do it. Okay. All of you. Yes, sir. ठीक है, चलो जाओ पढ़ाई लिखाई करो और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, Thank you, sir. स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम्स। ओके, जो भी तुम्हारा स्कूल का एग्जाम है अच्छे से तैयारी करो एनुअल एग्जाम्स। बाय। Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir.